हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं रिफॉर्म्स इन एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। तो देखो, जो ह्यूमन राइट्स है ना, वो अपने आप में एक सबसे बड़ा एक एम्बिगियस कंसेप्ट है। ओके, मतलब ये कि इसमें ना आप कह सकते हैं कि आईआर मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ना, उसमें जो ये एम्बिगस जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स, वो अपने अपने जो कंट्रीज का है ना, एक जो सिक्योरिटी बता के आप किसी कंट्रीज पे अगर जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट उठाते हैं या फिर किसी कंट्रीज के बारे में आप बोलते हैं, ओके, तो एक तरीके से वो वायलेशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी का बोल के इस डिसीजन को, मतलब जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर इस तरीके से कर देते हैं और ये यहाँ पे क्वेश्चन मतलब क्लोज हो जाता है। ठीक है, मतलब ये टॉपिक का प्रॉपर ना आंसर देते हुए और बातों को घुमाना, यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो जाता है। ओके, एंड देखो, इसको छोड़ते हैं। आपको मैं अगर बताऊं इस चीज़ के बारे में, तो देखो, एमबीएस कंसेप्ट मतलब इंटरप्रेट एचआर ह्यूमन राइट्स एज पर देयर ओन कन्वीनियंस, मतलब ह्यूमन राइट्स को ना सिक्योरिटी का कंसेप्ट बता के इसको क्लोज किया जाता है। जहाँ पे अगर आप देखें तो जो ह्यूमन राइट्स अगर काउंसिल हम देखें ना, तो वहाँ पे ग्रेट पावर्स हैं। वहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं, आप उन पे उंगली नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि वो ना एक तरीके से ग्रेट पावर है, प्लस वो आप कह सकते हैं कि उनके जो जैसे अगर हम चाइना को लें एग्जांपल, जिंगजियांग जो प्रोविंस है ना, वहाँ पे उल्गर मुस्लिम हैं। उनके बारे में ना कोई बात नहीं करता, कोई टॉपिक नहीं उठाता, उनके साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्यों? मतलब पाकिस्तान, यूएई और ये ईरान इसलिए नहीं बात करते क्योंकि एक तो उनके साथ जो कनेक्शन है ना, वो काफ़ी अच्छे हैं, है ना। साथ ही ये एक इंटरनल सिक्योरिटी का मामला, मतलब एक तरीके से आप कह के कि चाइना जब भी इस जो टॉपिक है इसमें बात करेगा तो इंटरनल सिक्योरिटी का करके और इसको क्लोज करेगा। तो ये सारी चीज़ें और अपने आप में बहुत ज़्यादा एक एम्बिगियस कंसेप्ट है ये। ओके, ना ही हम एच आर इसको बोल सकते हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स, और ना ही इंटरनल सिक्योरिटी। तो देयर इज अ नीड टू फॉर्मलाइज एच आर रिजिम। It is necessary to make it transparent functioning of the body related to HR should be improved। मतलब HR अगर मैं जहाँ पे बोलूँ तो ह्यूमन राइट्स आप समझ लीजिएगा। Since Human Rights Commission was unable to perform his job, and so the former Secretary General of the Kofi Annan suggested creation of HR Council, and ये 2006 में क्रिएट भी हो गई थी। उसके बाद only those states made binding commitment with respect to HR are members of HR Council, and countries require absolute majority in General Assembly to elect it to this body, है ना। उसके बाद it is an internal government body within the UN system and responsible for strengthening or protection of human rights across the world. And Human Rights Council came into existence in 2006. It was created by UN General Assembly. Its headquarters in Geneva, Switzerland. Okay, and HR Council replaced former UN Commission on Human Rights. एंड साथ ही कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ 47 मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूएन, एंड मेंबर्स ऑफ दिस काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली takes into account the financial contributions of candidates and aspiring to become members of Human Rights Council with respect to promotion and protection of human rights. Members to HR Council are elected for the period of 3 years, and after two consecutive terms, members are not eligible for the immediate re-elections. Okay, ये इनका क्राइटेरिया है। अगर हम देखें कि क्या इशू, व्हाट आर द इशू ऑन पर्टेनिंग टू एचआर काउंसिल, तो members of HR council are sometimes involved in HR abuses, जैसे चाइना have been the member of HR council, but its record with respect to religious minority in China, Uyghur Muslims, Tibetan Buddhist is very bad, तब भी वो HR council का member है। उसके बाद रशिया भी है। Rishi is also accused for the violating of HR. It was also member of HR Council, and India's position of in HR Council have been very minimal. Though India have
also been a part of HR council. Okay. And economic and social council, इको शॉक, अनवेल्थी बॉडी। अनवेल्थी बॉडी इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से ना इनके जो वर्क है ना वो ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर। ओके, वर्क ओवरलैपिंग एंड इन दोज organizations can also be same. And economic and social council has become an unwealthy body. There are so many agencies, programs under the EcoShock. EcoShock मतलब economic and social, okay na, council. Then coordination become also difficult. There is a lot of duplications of work in economic and social council, overlapping set of responsibility. Its work should be streamlined and it should only see the implementations of agendas. Okay. And economic and social council is principal agency for making recommendations, policy dialogue and policy review, coordination, etc. on social issues and environmental issues and economic issues also. Okay. And economic and social council is responsible also for developmental goal and at international level. And EcoShock Council is also responsible for coordinating work for UN agencies. EcoShock Council look after the work of following organizations under UN umbrella like UN Children Fund, IMF and World Bank, also known as Twin Bretton Woods institutions, International Labour Organizations, World Health Organization WHO, UNESCO. Okay. And similarly, the members of EcoShock Council is elected two-third majority of the General Assembly for the period of 3 years. Okay, that is criteria, and it comprises of 54 members of UN, which are elected by UN General Assembly for period of 3 years. And ICJ, International Court of Justice, does not have power of enforcement because सपोज अगर आपके पास, आप फैमिली मेंबर्स में सबसे बड़े हैं, ओके, उसके बाद आपके पास कोई पावर नहीं है, मतलब आप मतलब सिर्फ बोल ही सकते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, सपोज कीजिए, तो क्या कोई घर के जो छोटे लोग हैं वो आपकी बात मानेंगे? ओके, शायद नहीं, है ना? तो अगर हम देखें तो jurisdiction of ICJ is voluntary. It does not have any monitoring or enforcement powers. So some reforms should also be done to make it more effective. And ICJ is also considered as a word code with twofold jurisdictions. That is, legal disputes between two states goes to ICJ, and matter on which advisory opinion is sought on legal matters are referred to the ICJ by UN. And only those countries which are members of UN or which have accepted jurisdictions are parties in disputed cases. Okay. And state have no representation, no permanent representations at the court. Matter can be registered to ICJ through foreign ministers, respective countries, or through their ambassadors to the Netherlands. Its judgment are final and binding to the concerned parties, and mostly about appeal, without appeal. And democratizations of UN एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, मार्शन मैकलुहान, उन्होंने बोला था वर्ल्ड है ना एक तरह से ग्लोबल विलेज है जहाँ पे इंटर कोऑर्डिनेशन बढ़ती जा रही है ग्लोबल लेवल पे एंड डोमिनेटेड बाय बिग पावर्स। ओके, यूएन ब्यूरोक्रेसी है ना वो एक तरह से वेस्टर्न वर्ल्ड है पूरा। इसमें आप कह सकते हैं जैसे इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ interdependent and world become a global village, it is suggested that some new models of governance is needed. That is, governance should shift from technical institutions like World Bank, IMF, and it should be further shifted to the political body representative of a people around the world. And UN can representative people around the world. UN can be given this mandate for this purpose, and we can have UN Parliamentary Assembly where representatives are directly and indirectly can be elected, and we can make international institutions accountable to this assembly.
we can have direct elections for Secretary General, but this is this can be waste because it is difficult to realize the above reforms because great powers will not be supported, whereas smaller powers and smaller state will think that they don't have adequate representations. Okay, and other suggestions that UN can make more effective, that peacekeeping force है ना, UN should have a peacekeeping force, and UN have you can UN can delegate some of its work to regional powers, like if we can see that Africa, okay, Africa, in a South Africa Union, that Africa can handle their own issues. Okay, similarly Asian topic, we can see this in the background of Asian, name name is formed, and poverty eradications, uh, mainly we can see that एशियन जो ग्रुप है वो पोवर्टी इरेडिकेशंस के लिए बना हुआ था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ओके, एंड 1967 में इंडिया को भी इनिशियली इनवाइट किया गया था इसमें, जैसे रीजनल ग्रुपिंग। ओके, 5 कंट्रीज के बीच में हुआ था, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड फिलीपींस, और साथ ही सिंगापुर। ओके, फिर उसके बाद 5 कंट्रीज और आ गए थे इसमें। जैसे अगर हम देखें तो इनका जो गोल था ना, पुअर्टी को हटाना था, अवे करना था। वहाँ पे इंडिया को इनवाइट किया गया था, बट है ना, कोल्ड वॉर एरा में एटमॉस्फेयर में स्ट्रेटेजिक चॉइसेस थी, या तो आप हमारे साथ हो या फिर आप हमारे खिलाफ हो, ये एक डायलॉग दिया जाता था उस टाइम पे। उसके बाद इंडिया ने सोचा कि हम इन गरीब कंट्रीज के लिए मतलब इनके साथ क्या ही करेंगे। ओके, तो उस वजह से नहीं ज्वाइन किया। सिंगापुर, फिलीपींस, ये स्मॉल स्टेट्स थे, है ना, एंड इनको डर था कि कहीं हमारा मिसयूज ना हो, मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया के द्वारा। तो एशियन वे आया, यूनिट पावर, वीटो पावर आया था, जिसमें मतलब अगर आप डिसएग्री है एक भी कंट्री, तो वो एग्रीमेंट नहीं होगा। क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप आया था, क्योंकि अगर जहाँ पे क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप आएगा ना, होगा, तो वहाँ पे ना डिसीजन लेने में आसानी होगी। ASEAN is a geopolitical and economic organization of 10 countries located in the Southeast Asia. ASEAN was established in 1967. Founding member, that is Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, and Singapore. Since then, membership of ASEAN has expanded to include Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia. Okay, and condition before the emergence of ASEAN, that is this entire region was backward in economic sense, like South Asia. This region also suffered from the economic political consequences of the colonialism, and initially members of region also joined NAM, and NAM initiative failed to address their basic problems like poverty, economic backwardness. Hence, Southeast Asia's countries look for the alternative arrangement and establish ASEAN to attain the objective of economic development and political stability. Sati, the initially motivations which gave work to ASEAN was to desire have better external environment so that members can concentrate on the economic growth and national building. Second fear or common fear was communism. Asian countries were also fear about the China. That's why these countries joined hand for economic development and for purpose of poverty eradication. Okay. होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।